बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। SciArt अकेडमी में आपको खुशामदीद कहता हूँ। मेरा नाम है लीजान। तो 9th क्लास बायोलॉजी में हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 बायो एनर्जेटिक्स। तो पहला एक्सरसाइज वाला MCQs देखें। इन एन ऑक्सीडेशन प्रोसेस 14,135 किलोजूल एनर्जी इज रिलीज्ड। हाउ मेनी मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम ड्यूरिंग दिस प्रोसेस। तो यहाँ पे देखें 3 मोल्स ऑफ ग्लूकोज कंज्यूम दैट काइंड ऑफ एनर्जी व्हेन इट इज रिलीज्ड. Stage of aerobic respiration takes place at the crest of mitochondria that is called electron transport chain. A option is correct. In the process of cellular respiration, 180 ATP molecules are produced. How many moles of glucose consumed during this process? 5 moles of glucose. B option is correct. Loss of electron and proton is called oxidation reaction. A option is correct. Each mole of ATP store energy that is called 7.3 kilocalorie per mole. A option is correct. Fundamental molecule produced during photosynthesis that is called glucose, which is produced during photosynthesis. A option is correct. Light dependent reaction takes place in that is called thylakoid. B option is correct. Reaction in which solar energy is transferred to glucose from ATP and NADPH2 takes place in stroma called dark reaction. B option is correct. Splitting of water in presence of light called photolysis. C option is correct. Splitting of glucose glycolysis for release small amount of energy which is enough to generate 2 ATP adenotriphosphate. A option is correct. चैप्टर 8 न्यूट्रिशन का पहला MCQ देखें। सिलेक्ट द मिसमैच। तो यहाँ पे आपको मिसमैच जो है वो सिलेक्ट करना है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि फैट जो है स्टार्च जो है वो फैट्स में नहीं होता, स्टार्च जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में होता है। तो सी ऑप्शन इज करेक्ट। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन के काज, विटामिन के की डिफिशियंसी से एनीमिया होती है, जो ब्लड की एक डिजीज है। बी ऑप्शन इज करेक्ट। Period of rapid growth and development that is called adolescence. C option is correct. Deficiency of dietary protein cause an imbalance in the gastrointestinal system that is called kwashiorkor. D option is correct. An animal that migrates great distance would obtain the greatest benefit from storing its energy as that is called fats. A option is correct. Which of the following vitamins is correctly associated with its use? That is, you can see vitamin A. D option. Incorporated in the visual pigment of the eye. आंख के लिए जो मुफीद विटामिन होती है वो होती है ए की कमी से वो जो नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। Which of the following statements describe pepsin? तो यहाँ पे डी ऑप्शन को देखें। It begins the hydrolysis of protein in the stomach. D option is correct. Which of the following is true of bile salts? They emulsify fats in the duodenum. C option is correct. In human digestive system, trachea and esophagus both connect to the pharynx. C option is correct. All are sources of calcium except red meat. रेड मीट जो होता है वो कैल्शियम का सोर्स नहीं होता। बाकी सब जो MCQs में है, ऑप्शंस में है, वो सारे के सारे कैल्शियम के सोर्स होते हैं। चैप्टर नंबर 9 जो है वो लास्ट चैप्टर है, जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। पहला MCQ देखें। द मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स लाइक फूड टेक प्लेस थ्रू फ्लोएम। डी ऑप्शन इज करेक्ट। वाटर रेगुलेट द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द xylem, that is called the evaporation of water from the leaves. C option is correct. Phloem transport of sucrose can be described as going from source to sink. Which of the following would not normally function as a sink? That is option number A, mature leaf. A option is correct. Human plasma proteins include which of the following? That is fibrinogen and albumin. So D option is correct, 1 and 3. Which of these are involved in the clotting of blood? That is platelets. A option is correct. In human heart, blood returning from lungs first drains into the that is left atrium. A option is correct.
Root hairs are most important to plant because they increase the surface area for absorption. The option is correct. A type of circulatory system blood flow through the space among tissues called open type circulatory system. A option one only. Part of root between epidermis and endodermis called cortex. The option is correct. लास्ट इस चैप्टर का और इस 9th क्लास बायोलॉजी का एमसीक्यूज देखें. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू द एरिया ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस. बी ऑप्शन इज करेक्ट. तो यहाँ पे आपका 9th क्लास के बायोलॉजी के चैप्टर्स जो हैं एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज हमने कंप्लीट कर दिए. उम्मीद है ये चैप्टर्स ये एक्सरसाइज वाले एमसीक्यूज आपको समझ में आएंगे. तो इसी तरीके से देखते रहें, समझते रहें, पढ़ते रहें. थैंक यू वेरी मच.